Hey guys, so I'm not gonna waste any more second just because आज का दिन खत्म होने वाला है and as we need to be consistent, I'm just going to do whatever part is left with our exceptions, right? And along with that, before diving into our application, I was just overviewing this application and मैंने ये चीज़ देखी कि inside our project, right? Inside our project entity, yeah. Inside our project, I have this owner, right? But basically, when I have my user, right? अगर मेरा user at moment particularly उस project को use कर रहा है, right? So only user is allowed to use that or create that project, right? So उस particular moment में मुझे ये तो पता ही होगा ना कि वो user ही owner है. सो दैट इज़ द रीज़न मुझे इस ओनर को एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिखने की या फिर एक नया ओनर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि इन आर एनम्स, राइट, इन आर एनम्स आई कैन सी मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट रोल में ओनर था. सो आई कैन डायरेक्टली गिव एनी यूज़र द दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रोल कि ये बंदा ओनर है, दिस यूज़र इज़ पर्टिकुलरली ओनर, राइट. सो इफ़ आई हैव दिस एनम, आई डोंट really need to create another variable for this, right, inside our project. So basically we are just going to revert this wherever we have done that. And कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे बट उन्हें रिमूव कर देंगे. बट हम लोग जब ऑथराइजेशन के पार्ट में जा रहे होंगे तब हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट. सो या दिस इज इट. बट बिफोर दैट वी वर in our global exceptional handler, right. एंड हम लोगों ने हर चीज़ हैंडल नहीं करी थी. जस्ट लाइक हम लोगों ने हैंडल इनपुट वैलिडेशन हैंडल नहीं करा था. या we just handled the bad request, right. We also handled this resource not found exception, but we did not handle that handle input validation error. I don't know कि मैं लाइव हूँ. I don't know कि वॉइस क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है. जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव मोर टाइम टू लुक एट दोज थिंग्स राइट नाउ, राइट. बट ये एक नया व्यू है, राइट. नया सेटअप भाई. यहाँ पे टेबल में मैंने रख दिया माइक जस्ट बिकॉज थोड़ा कन्वीनियंट था मेरे लिए. सो या now we're just going to create another response entity of API error of another method. Let's just say input validation error. Yeah, we need to do that. So I'm just going to create another public response entity, right. Inside this entity, as we did earlier, API error use करूँगा. And also इसे भी exceptional handler लिख देते हैं, exceptional handler. And this exceptional handler is basically using that not valid exception class, right, जो हम लोगों ने बनाई थी. So method argument करके कुछ होगा. मेथड आर्ग्यूमेंट करके बनाई थी हम लोगों ने क्लास. सो मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिडेशन एक्सेप्शन डॉट क्लास. At the rate exceptional handler, API error. After this API error, I'm just going to do handle input validation error, right. Inside this, I'm just going to use this method argument not valid exception, right. Yeah. एंड आफ्टर दिस आई नीड टू यूज़ दिस ex. बेसिकली इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम. तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बेसिकली अपना इनपुट वैलिडेशन एरर जो हम लोगों ने पहले बनाया था, राइट, इनसाइड यू कैन सी जस्ट लाइक दिस. हम लोगों ने जैसे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड लाइक दिस we handle bad request. I'm just going to handle this not valid exception, right. It basically just tells me कि मेरा जो input है वो valid है या नहीं है. It basically tells me that जैसे कि हम लोगों ने अपने records बनाए थे, right, DTOs बनाए थे. That DTO basically tells us that what data transfer object, right. It is basically data transfer object. Is it basically holding the value of that input from the front end via the user, right. So basically user सही input दे रहा है या नहीं दे रहा है वो चीज़ हैंडल करने के लिए भी एक एक्सेप्शन लगना चाहिए. हम लोग अपनी वैलिडेशन दे रहे थे, राइट. बट हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में ही देखा
कि हम लोग खुद के एक्सेप्शंस बना रहे थे, राइट. सो फॉर दैट टू हम लोग एक इनपुट वैलिड एक्सेप्शन भी बना दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज फॉर एनी केस अगर हमें अच्छे तरीके से यूज़र को दिखाना हो कि यू आर नॉट डूइंग द वैलिड पार्ट और दिस इज़ नॉट वैलिडेटेड वाया द एप्लीकेशन, जो भी आप इनपुट कर रहे हो. सो फॉर दैट पार्ट वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट. एंड फॉर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस API एरर. ये क्या कर दिया मैंने? Here we are. I'm just going to use this API error. बेसिकली क्यों? क्योंकि मुझे एट द एंड एक रिकॉर्ड भेजना है और वो रिकॉर्ड किस टाइप का होना चाहिए? API एरर टाइप का होना चाहिए. एंड बेसिकली अभी हम लोगों ने API एरर भी हैंडल नहीं करा है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैंडल दैट API एरर टू. बट आई कैन सी कि मैं जब इनपुट वैलिडेशन की बात करूँ ना, मैं इसे एक लिस्ट की तरह भी भेज सकता हूँ. या basically we will see that, but for now let's just carry on, right. If I do this API error, I'm just going to create this API error and need to pass this HTTP status for कि यूजर ने इनपुट ही गलत दिया है, उसके लिए बैट रिक्वेस्ट वुड बी बेटर, राइट. along with that I can pass on this exception dot get localized message. We can basically send this get localized message, or we can also type write this like this. I can just return this string that input is not valid, right. Let's see if I'm going to do that, but not now. Let's just move on for now, right. So this is it for this API error. Yeah, now let's just log this error as we did earlier, right. API not like this. I'm going to do API error dot to string. Yeah, मुझे API error को string में भेजना है. And for what? For my exception, right. Yeah, so this is cool. Now as always, जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे, I'm just going to return my response entity, and inside this response entity I want my status to be returned, right. Yeah, and I was basically you can see it here, like I was basically sending this API error dot status and body API error. Let's just be here, right. And I'm just going to do that same part, API error dot status. After this I'm just going to send this body अगर मैं रिस्पॉन्स एंटिटी स्टेटस भेज रहा हूँ, एंड या लाइक लेट जस्ट कीप इट सेम, राइट. हमें कुछ ज़्यादा अतरंगी करने का ज़रूरत नहीं है. लेट जस्ट डू दैट. या हियर वी आर. या हियर इट इज. आई गेस this is cool now. This is cool. Let's just run this application. Yeah, let's just wait, and inside my Lovable clone I'm just going to create another. So there is no error, no warnings, right. So let's just create another let's just do this HTTP project and right. Okay, so I have post HTTP localhost API projects. Let's just create. I don't know कि हम लोग create कैसे करते थे. So I'm just going to go inside my controllers. Where is my controllers? Controllers, project controller. Okay, I need to create my project, right. मुझे अपना project बनाना है. So inside my project I don't have any post mapping. So for this post mapping, okay, yeah, API projects is good. Okay, API projects is good. It is post mapping. I can use this body of raw data. Why is it not happening? JSON. Yeah, here we are. Let's just, I'm not going to write anything just because I need to get that, what I need to get this exception कि मेरा exception सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. So I'm just going to do that. Let's just do this. So yeah, here we are. We have this 4004 bad request. Yeah, right.
बेसिकली यही हम लोगों ने स्टेटस हैंडल करा, एंड दिस इज़ द मैसेज इज़ बेसिकली सो वास्ट, एंड कोई भी बंदा इसे पढ़ने नहीं वाला, इस मैसेज को तो नहीं पढ़ने वाला, राइट? सो आई डोंट नॉट एक्चुअली वांट दिस पर्टिकुलर मैसेज, सो कैन वी चेंज दिस? लेट जस्ट ट्राई टू चेंज दिस। होता है तो चेंज कर लेते हैं, नहीं होता है तो, but I guess we can do that, right? We can do that. We can go to my API errors. I have my errors, right? I have my errors. I can go inside my API errors. Yeah, we did not actually handle this API errors, right? So can I do API errors? And let's just say कि अगर मैं at the end एक list भेजता हूँ, right? A list of API errors. Uh, a list of, let's just say errors. I can put it like API field error, not API errors. Is it if I really field error? Basically, this API field error gives me the particular field, but it is showing this error. Okay, let's just move on. Here we are. I'm just going to create another method. Let's just say this is as constructor, right? Basically जो पहले constructor बनाया उसमें क्या हो रहा है, उसमें status और message मिल रहा है, right? But now when I'm going to create this API error, so I'm just going to get this particular errors and status message, right? So let's just create that API error constructor बनाते हैं. Inside this constructor and HTTP status. Yup, string message. Along with that, I want my list, right? Inside this list, I want my API fields. API field. I guess API field. Error. After this, I can write down this errors. Yeah. I guess it's not good. मुझे API fields error बनाने पड़ेंगे inside my API errors. Yup, I can do that, but not right now. HTTP status instant dot now. Here we are. This is my constructor. Inside this constructor, I'm just going to call this method for status, for my message, for my instant dot now, and for my errors, right? Yeah. And as this particular API field error which I'm using is not here, right? ये कोई वो डेटा टाइप नहीं है जो प्री बिल्ट है, राइट? ये कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है और ये कोई डिराइव डेटा टाइप भी नहीं है. दिस डेटा टाइप इज बेसिकली व्हाट आई एम रिटर्निंग, एंड ये है नहीं तो मुझे ऑब्वियसली खुद बनाना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस एपीआई फील्ड एरर टू, एंड बेसिकली आई कैन से दिस एज रिकॉर्ड टू, कि मैं एपीआई फील्ड एरर को भी रिकॉर्ड ही बना देता हूँ. मुझे कोई इसकी मेथड, इसको कुछ ऐसा देने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है. कैन वी डू दैट? After this, we'll just end this. And can I do this like, I don't know this yet, हाँ, कि मैं रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकता हूँ नहीं? वैसे तो बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग एरर और ऑब्जेक्ट्स भी, या एरर और ऑब्जेक्ट्स भी इसी तरीके से बना सकते हैं, राइट? सॉरी, एरर और ऑब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से बना सकते हैं कि मतलब एक ही क्लास के अंदर दो डिफरेंट क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स. सो या, this is the record, this is the API field error, and I can just make this API field error as record. Let's just put the field here, field. Yeah, along with this field I can put the string message. हालांकि मुझे मैसेज की ज़रूरत नहीं थी, but I guess we are clear now why this is showing me some error. This status message instant dot now is showing me error, right? Just see.
require type list provided instant. What? Yep. Let's just remove that constructor. Let's just go on with this constructor, right? So yeah, I guess this is it. अगर मुझे अभी तक का काम दिख रहा है तो now what I have to do is let's just go back to our global exceptional handler. Let's just go back to my global exceptional handler. Here I'm getting this error, right? Why I'm getting this error? Just because it cannot resolve this constructor API error. Why? Basically क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, राइट? एंड दिस एक्सेप्शन डॉट गेट लोकलाइज मैसेज इज नॉट स्ट्रिंग. सो मैं जिस तरीके से कह रहा था कि हम लोग इसको किस और तरीके से पास ऑन कर सकते हैं, सो आई गेस मुझे वही तरीका करना पड़ेगा. न्यू API error. Yeah, we can write down input validation or something like input validation failed, 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 erro. Yeah, I guess this should be good. New API error should be status dot by request comma. यप बट एट द एंड मुझे लिस्ट रिटर्न करनी पड़ेगी ऑब्वियसली ना. आई कैन सी इट हेयर. यू कैन नॉट रिजॉल्व दिस कंस्ट्रक्टर API error. Why I cannot resolve this particular error? Just because मुझे list return करनी है. So I can just let's just remove this, right? What if I just end this? Not just end this. Let's just say if I create a list and this list should be holding the API field error, right? API field error हम लोगों ने बनाया था. एट द एंड मुझे API फील्ड एरर भेज का लिस्ट भेजनी है. सो मैंने डेटा टाइप लिख दिया. नाउ आई कैन जस्ट टेल इट लाइक एनीथिंग. लेट्स नेम इट लाइक errors is equals to exception use करके I'm just going to bind the result, right? I'm binding the result. If I'm going to bind the result, I just get field. I'm just going to add down everything जो भी मेरे पास अभी तक आया है. Now I'm going to use this stream, and after this stream I can just map down this particular thing. Error new API field error, and inside this I can tell it that I want to get this AP error dot get field, and along with that I want a message. So yeah, error dot get default message, I guess. Get default message, I guess. Yep. Dot to list. Can I do this? This is for get field. This is for get default app field. This is the map. Now I'm getting this error. Cannot resolve the constructor API error HTTP status string. Create the constructor. This is basically asking me to create that particular constructor जो अभी उससे पहले हम लोग हटा चुके थे, right? This status message. What if I remove this? I'm getting this error.
I don't actually want this, but it's still in my global exceptional handler. I'm not getting any error, but in my API, I'm getting this error for my instant dot now. Why I am getting that? So, comma instant dot now. Now, I'm just going to get this error for this particular field. Input validation field errors. Let's just go to our. Hi, do you build application daily at this time? How do you plan? Do you study before starting what to build in live? You just go with the. So how many lectures are you planning on this? I guess basically I'm just planning to go with almost 30 lectures, right? This is the 10th lecture, and all with almost 30th lecture we'll be completing our lovable clone, right? If I just stay consistent for this. And no, I basically don't go online at this time daily, just because we don't know यार कि कब टाइम मिले कब नहीं मिले. And I plan my videos basically like having this rough idea कि मुझे किस तरीके से बनाना है, and I just write the flow कि मुझे पहले क्या करना होगा and क्या चीज़ मेरी गलत थी पिछले लेक्चर में, and I just go with the flow. And in our previous lecture I told you all that I'm not gonna continue my lectures just because if I'm debugging something, I'm not gonna go with the flow just because most people don't like it, and they do not love to watch anybody else debugging something, right? Just because debugging sometimes takes almost half an hour or 1 hour, so it is just a waste of time for you all. So I just said it earlier in our previous lecture, just previous lecture, कि मैं लेक्चर्स नहीं लूँगा, मतलब स्ट्रीम ही एंड कर दूंगा अगर मैं कहीं पे भी एरर में आया, लाइक दिस लेक्चर तुम लोग देख सकते हो. आई डू नॉट हैव एनी क्वेरी, लाइक मुझे यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए था, बट आई एम गेटिंग दिस एरर, राइट? एंड दीज बोथ कंस्ट्रक्टर्स आर सेम, these both constructors are same as it is, right? And message and API field. Can't I do it like instant on now, comma errors are errors? Is this not possible? Like, I don't know why it is not possible, but it should be. List. Okay. So I'm just getting this error. If I basically comment it down, I'm going to get this error in my API errors. Okay, wait. I don't know. I'm just going to take time, right? And if you guys have any errors, just because मैं debug कर रहा हूँ live, I just want you all to quit this lecture. मैं थोड़ी देर बैठ के इसे debug करने वाला हूँ, क्योंकि ये एरर वैसे आना नहीं चाहिए था. दिस स्टेटस मैसेज डॉट कॉम इंस्टेंट नाउ. आई गेस
I guess I can have this. What if I just guys जाना मत कहीं. What if I just put the null value here? Uh, this is my API error, right? API error. I'm not seeing any error now. What about my global exception handler? Not getting any error. Why is this particular thing is showing me error? Expected what, yaar? Uh, like I'm just going, like I'm creating some method. What the heck? मैं ये कोई method थोड़ी बना रहा हूँ. It is my record. Remove unnecessary semicolon. Let's just run this application, right? I'm just going to run this application. Let's just see what Java reached end of file while passing. Okay. I'm just going to run this application now. Expected what the hell? Okay, here we are. इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के लिए मेरे पास ये था, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के लिए मेरे पास ये था. And this record I can say this. I don't know, do I need to do this? No. Yep, no. Not at all. I'm not getting something right. How is this API error actually working? I don't get it. Okay, this is it. What? नहीं यार, इसमें भी तो एरर आएगा ही just because पासिंग नहीं हो पाएगी. इसमें भी है. What about this? Will this run? I don't know, but why my IntelliJ idea is basically behaving like कि इस record को भी method की तरह curly braces होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. I don't know, I'm not getting that. Basically हम लोग जाएंगे यार, उस बारे में भी जाएंगे, उस बारे में भी बात करेंगे कि क्यों. Yup, here we are. So application is running now. Let's just go to our project, right? Let us go to our Postman. I'm just going to dive into my Postman. So here we can see कि हमारे पास कितना बड़ा मैसेज आ रहा था for our validations not working, and it was basically must not be blank message, right? Just for showing this particular message, it was giving me so much of error as in message, right? So ये ना चाह के किसी भी एक particular user को at the front end side never, he or she will never desire, a user will never desire this type of message as an error, right? Because this is not in a readable format, right? So yeah, what if I just do this once again? See, in this way the user can say कि हाँ भाई अब मैं पढ़ सकता हूँ कि भाई मुझे एरर आ रहा है 404 बैड रिक्वेस्ट का. Message is basically the input validation field error. That means my particular input field is wrong, right? That is the reason कि मेरे पास ये मैसेज आ रहा है. अब जो हमारे पास जो पहले मैसेज आ रहा था वो भाई रीडेबल नहीं था,
ठीक है, बेसिकली बंदा पढ़ने को पढ़ सकता है, बट एट फ्रंट एंड जो बंदा हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करने आया वो पूरा का पूरा अगर थोड़ी सी गलती कर दे वो पूरा का पूरा एरर पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा, ठीक है, वो कोई बैकएंड का डेवलपर नहीं है जो उसको पूरा का पूरा मैसेज दिखना चाहिए. सो फॉर दैट वी जस्ट हैंडल्ड आवर इनपुट वैलिडेशन, एंड दिस इज द रीज़न हम लोगों ने आज का लेक्चर स्टार्ट करा था विद दिस पर्टिकुलर मेथड, हैंडल इनपुट वैलिडेशन एरर, राइट. सो आई गेस या आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं. नो, आई वांट टू टीच मोर, बट डू वी नीड टू टीच मोर? लेट्स जस्ट गो ऑन यार, लेट्स जस्ट गो ऑन. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी आर, इट इज सो गुड. लेट्स जस्ट मूव ऑन, राइट, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर अनदर लेक्चर. सो तुम लोग ये देख सकते हो कि अभी जितना भी हम लोगों ने करा, अभी हम लोगों को एप्लीकेशन में सब कुछ सही मिल रहा है, राइट. बट you can see that you get some values as null, right? Where we are, see, I am getting some values as null, right? But basically at the front end side, if I don't have any value, right, if I don't have any errors value and it is basically showing me null, so I'm just not going to show that in my front end, on my front end, right? So I'm just going to do that कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. अगर किसी में null value है तो I don't want to include that inside my JSON format which I'm giving back to the front end, right, to the user. So let's just do that inside my API error. I can go inside my API error, and inside this API error मैं record में लिख सकता हूँ, record API error JSON include. I can basically, for my list, for my errors, I can say that hey, I do not want to include this. So there is JSON include, right? Yeah, inside this JSON include, I can just say that hey, JSON include JSON include dot non null. I can tell it like this कि भाई मुझे non null value चाहिए. या this would be fine, I guess. इससे हमारे पास जो null values आ रही हैं वो हमारे पास null values नहीं आएगी. इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि basically hey, JSON include the value that is not null. JSON include the value that is not null. So if the value is null, it is not going to add that, right? So basically यहाँ पे error अब नहीं आ रहा है, right? So yeah, ये हुआ कैसे? Basically my JSON is used to do the serialization, right? So this serialization is basically what it is, basically going to convert my JSON to Java objects and vice versa, the Java objects to JSON. So basically उसी से हुआ, and I told it कि hey, if I want to include this JSON, the value of null, the null value should never be stored inside this particular list of errors, right? So basically it did that. So now I'm just going to add the indexes, and whenever we talk about indexes is basically a data structure that holds the value of key and the I can say the value pair, right? So basically एक key होती है जो बताती है कि कहाँ पे मेरा particular index है for that particular location, and उस location से क्या होता है, वो location अगर मुझे पता चलती है तो मेरा searching जो overall database में searching होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. सो फॉर दैट वी यूज इंडेक्सिंग, बट ओवरऑल इंडेक्सिंग इज नॉट समथिंग विच वी प्रेफर, राइट? जस्ट बिकॉज अगर तुम लोग सोचो, अगर मैं हर एक चीज़ के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, राइट, दैट इज इंडेक्स, so that is going to take so much space if there are billions of users in my database, right? So for that we basically don't use that, but it helps us to decrease the time complexity. So let's just do that part 2. If I just go to my indexes, and
for that I have to go inside my entity and I have to go inside my projects, right? So हम लोगों ने ओनर के बारे में स्टार्टिंग में बात करी कि मुझे ओनर क्यों नहीं चाहिए, राइट? एंड वो भी चीज़ आज ही करें या नहीं करें, आई डोंट नो, बट let's just add the indexes for now, right? Inside this tables, do I have the table, right? I have the tables, right? Inside this tables I can use this indexes. Basically indexes यहीं पे होते हैं, and for that basically मुझे मेरे पास दो फील्ड्स होती हैं, एक लिस्ट कॉलम्स होते हैं और एक नेम होता है. नेम इज़ बेसिकली पर्टिकुलरली जो मुझे चाहिए वो लिख देता हूँ, एंड लिस्ट कॉलम्स, कॉलम लिस्ट, नॉट लिस्ट कॉलम्स. कॉलम लिस्ट इज़ बेसिकली टेल्स मी कि मुझे असेंडिंग में ऑर्डर चाहिए या डिसेंडिंग में ऑर्डर चाहिए, एंड बेसिकली मुझे किस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम के लिए वो वैल्यूज़ चाहिए, राइट? लेट जस्ट लाइक मैं नेम के लिए ले सकता हूँ, मैं आईडी के लिए ले सकता हूँ, नॉट आईडी तो रहने दो यार, मैं नेम के लिए ले सकता हूँ, मैं क्रिएटेड ऐड के लिए ले सकता हूँ, मैं अपडेटेड ऐड के लिए ले सकता हूँ वैल्यू, मैं डिलीटेड ऐड के लिए ले सकता हूँ. सो इट इज़ माय चॉइस कि मैं किस तरीके से इंडेक्सेस को स्टोर कराना चाहता हूँ. सो बेसिकली मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है, एंड फॉर दैट मैं बेसिकली अपडेटेड ऐड वैल्यू का इस्तेमाल करके लेता हूँ. एंड दिस इज जस्ट फॉर टेलिंग यू, जस्ट फॉर शोइंग यू कि हम लोग इंडेक्सेस का भी यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज all of the components, all of the annotations. That is the wholesome reason कि मैं indexes को use करूँ, वरना there is no such a crisp or we can say a particular way कि हमें indexes use ही करना पड़ता है. That is not considerate after all, but yeah, we're going to do that. So let's just do that. Inside this indexes I am going to use this index annotation. Yep, index annotation. And inside this index annotation we I told you earlier, we have this name and we have this column list, right? Yeah. So for this column list I told you that I want to use this updated at you can see updated at here, right? So basically why I am not using this type of part, this just because whenever my Hibernate is using the table name, so it is just going to convert this to this only or this to this only, right? Basically these are same according for when we are talking with the Hibernate. So I want this in my descending order, so let's just write DESC. If I know, let's just write DESC, right? Yep, if I add this DESC comma DELE deleted at yep, here we are, and along with that I can just write down the name. हम लोग नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं. I'm just going to put down that index projects updated at, I'm basically telling कि मेरा नेम क्या है, इंडेक्स प्रोजेक्ट्स अपडेटेड एट डिसेंडिंग, राइट? तो मुझे जो भी अभी इंडेक्स की वैल्यूज़ चाहिए वो प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, राइट? एंड दैट प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी मेरी इंडेक्स वैल्यूज़ आएंगी वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए कि उनका इंडेक्स होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में वेन एवर दे आर अपडेटिंग, राइट? तो जो रिसेंटली अपडेट हुआ होगा वो सबसे ऊपर आएगा और डिलीटेड एट नीचे, राइट? सो या हियर वी आर. I can basically, if I have wrote down this indexes, I can also write index. Sorry for this यार, गर्दन दर्द हो रही है. Wow. I can also write the indexes like this, right? Yeah, I can just write comma, and after this I can use this index annotation. Inside this index annotation I can just use this name. Name के बाद तुम्हें पता ही है column list use कर सकता हूँ. Yep, column list use कर सकता हूँ. And let's just use this for index projects deleted at, if I want to use that. Yeah, let's just use it for deleted at index projects deleted
at, right? Yeah, and for this column list I can just tell it ki hey, I want to use this deleted. If I don't want to use the column list, can I basically tell it that I don't know, can I use this as just column? No, column list delete it at, right? Yep. And also if I don't want this, let's just what if I say that hey, I want my another index, right? I have my another index annotation name, and then the column list. This column list would be this comma, put down the comma here. What I have to do is कि मुझे एक और index projects, let's just make a union for this, right? मैं ऐसा सोच लेता हूँ, let's index project चाहिए for the deleted part, deleted at updated at desc, ठीक है, दोनों चीज़ें डिसेंडिंग में चाहिए. सो या यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीटेड एट यूज़ करते हुए कॉमा लगाते हुए ये कह सकता हूँ आई ऑल्सो वॉन्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड एट, एंड दिस शुड बी डीएससी डिसेंडिंग. So I guess this will work. This will work fine. Yup. Index. So I'm just going to let this first. I'm going to open my dbeaver. Installed नहीं है भाई है. So dbeaver is going to take time. Let's just see if someone is watching. No one is watching, brother. So I guess just 5 minutes left for this day. So I'm just going to end this video live lecture soon enough, right? So here we are. dbeaver में हम लोग okay, let's just cancel this. I have my Postgres, I have my databases. Sorry. Let's just wait, right? Okay. Application dot properties कहाँ पे है यार? If not that, let's just go to the not pom.xml. Yeah, this is application dot properties. Test database. It is test database, right? So ये है हमारा database. We can go here. इसके public में जा सकते हैं. And then I can dive in here and I can see. Let's just refresh. I have this user keys, project keys, right? I'm just going to run this application. Updated at, deleted at, right? So yeah, I guess application is working properly. So you can see it here कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ गई, मेरे पास आ गया index projects deleted at, updated, deleted at, updated at, right? So this is the way हम लोग indexes को use करते हैं. And yeah, now we are just going to delete this
particular owner, right? User owner. So we are just going to do that in today's lecture. Today abhi 2 दिन बाद आने वाला है, right? So yeah, this was it for today. And I guess तुम लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी. And I want you all to like not waste your time, right? So for that I want to show you something. I guess no one is watching my lectures, right? So I'm creating this book of Spring Boot. You can watch it here, right? So this would be the first Spring Boot book ever that would be teaching you each and everything about Spring Boot, right? And ये exclusively coders engineers के like I'm just going to create this, yaar. Yeah, I'm just going to create this startup. And yeah, जस्ट यही बताना था कि आई एम क्रिएटिंग दिस बुक. सो अभी 12 बजने वाले हैं एंड नींद आ रही है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन सम ऑफ द टॉपिक्स फॉर माई बुक एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप. सो देन आई एम गोना स्लीप. सो या, फॉर टुडे दैट इज़ इट. 1 मिनट बचा है अगला दिन होने के लिए. तब तक के लिए जय श्री